So we are back again in the Power Pack second day of our National Conference 2023, organized by Continuing Professional Education Committee of ICAI and hosted by Pimpri Chinchwad branch of WIRC of ICAI. The theme for this year being the thirst, Jnana Trishna, the thirst for knowledge. Being a CA, सरस्वती का तो हाथ आप सब पर है ही, बट इस बार की जो थीम है ज्ञान तृष्णा, इसके माध्यम से दिवाली के पहले आप सभी के ऊपर लक्ष्मी जी का भी हाथ होगा, definitely. So may this Diwali you be blessed with the best. The 75 being in the 75th year of ICAI, it's a big achievement for each one of you. So a huge round of applause for everyone sitting there. It's a big milestone to achieve. So today we start with our first technical session. For our first technical session, I would like to request CA Sachin Bansal, Chairman Pimpri Chinchwad Branch, CA Pankaj Patni, Vice Chairman Pimpri Chinchwad Branch, CA Sarika Chodia, Secretary Pimpri Chinchwad Branch, to escort the speaker, and CA Vaibhav Modi, Vikasa, Chairperson, to escort our first speaker of the day, Speaker CA Advocate Jatin Harjai, on the dais. A huge round of applause for us. May I now request CA Sachin Bansal, Chairman, to welcome Advocate CA Advocate Harjai by offering memento and floral bouquet. Moving forward to the introduction of the speaker, so may we have the AV please. Mr. Jatin Harjai to you. Mr. Jatin Harjai is practicing advocate. He's practiced as a chartered accountant for more than 15 years before starting legal practice. He is also certified anti-money laundering specialist. In a short span of time, he has been recognized for his contribution and expertise as a knowledgeable professional, advisor and consultant in the field of financial consultancy and tax advisory. He is a guest faculty on various educational, professional and industry platforms and shared his views on VAT, CST, entry tax, works tax and GST. As a matter of GST awareness and preparedness, before and after implementation of the biggest Indian tax reform, he has vastly addressed to professionals, industry and government officers. Mr. Harjai is actively engaged in representing industry before department at various levels. He has represented in the Tax Advisory Committee before Chief Minister of Rajasthan for giving recommendation and suggestion before the state budgets. Jatin leads a team of professionals which include advocate, chartered accountants and company secretaries and is providing services to clients which are spread across the country. Jatin is accredited trainer of NASIN for GST training to be provided to trade industry as well as GST officers of the central government. Apart from being panel GST trainer of ICAI, Jatin was part of faculty identification and trained the trainer program of Indian GST as well as UAE VAT. He is a member of panel of GST experts maintained by ERC of ICAI, chairman of Technical Research Indirect Taxes Committee of Tax Consultant Association of Jaipur,
founder convener of the study group framed by the ICI for study, research and recommendation on GST, co-opted member of Direct Tax Committee of ICI for the year 2018. He did his article training from Kalani and Company, Jaipur. He completed his BCom in 2001 and CA in November 2003. He has diploma in ESA from ICI and certificate course on indirect taxes and FTP by ICI. He also has LLB from University of Rajasthan. Thank you. Now that was quite a motivational introduction. I now request you, sir, to come forward for your session. The topic for the session being assessment and adjudication. Sachin Bansaji, Chairman of the branch, all the other dignitaries. A very good morning to all of you. Sunday morning I can understand. Difficult time for study. We understand, but family doesn't understand. Anyways, time is crucial. And topic is I believe it's an interesting topic. Many a time it may sound like अरे ये तो इसमें तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा ना तो valuation का पता लगेगा, neither will be able to give me the neither will get to know some answer to our queries or in relation to input tax credit or MIDC or something etc. Assessment adjudication, we are getting it done since long. So before I proceed on the topic, I would like to ask a question to all of you. What is the assessment? And before giving an answer, please note the moment you give me the answer, there will be a second question. What is adjudication? Today's topic is assessment and adjudication. So before we proceed to the topic, we must understand what the assessment is and what is adjudication. Is it something interchangeable? So when we are getting cases processed under GST law, is it assessment or adjudication? Assessment. Or in some cases assessment, in some cases adjudication? What is that? Any volunteer? Assessment. Assessment. Okay. Any other one? So under the GST law, we are getting assessment done, not adjudication. This is what one participant said, not me. See, I'm parking this question. I'll come back to it maybe after 10 to 15 minutes time. If you heard me earlier, I always start with some of the fundamental aspects of the taxation statute, which I'm going to do on today as well. I'm sure each and every one of you are well aware that foundation of any taxation statute under India is Article 265. That's going to be very, very important for today's session. Article 265 says, no tax shall be levied or collected otherwise than by way of authority of law. Please mind the word or. And this phrase is written in negative. That means neither there can be a levy nor there can be collection until it is authorized by the law. That's the most important aspect. So maybe yesterday you have gone through with a couple of provisions in relation to input tax credit, whether tax on MIDC plots are to be paid or not, or XYZ supplies are taxable at so and so rate, exempted, not exempted, what is place of supply, etc., etc., etc. All these aspects are in respect of are levy and matters incidental thereto.
Levy and matters incidental thereto, and that's only a half part. Remaining half part is the collection of taxes. Collection of taxes starts after filing of your return, meaning thereby when department thinks that maybe the returns which you filed, the tax which you have paid is not correct, they want to examine it. From there collection starts. And if collection is not lawful, if the process of collection is not lawful, then levy also fails. That is what importance. Since it is in Article 265 is written in negative, if you speak it in positive, it will sound like tax has to be levied or tax shall be levied and collected by authority of law. And not only levy, but collection must also be as per statutory provisions, not otherwise. You may refer beautiful judgment from Honorable Supreme Court in case of Municipal Council versus Kamal Kumar. In this case, this aspect has been dealt in a great aspect, that if the collection is done by way of law, otherwise done by way law provides for, then levy also fails. So anyway, I think one point which we have configured out of this maybe last 3, 4, 5 minutes discussions, deliberation, that collection must be lawful. Now, second principle which I have wanted, that before I proceed to the topic, 2 principles I want everyone must know without any doubt. That if law provides that certain authority should exercise their power in certain way, then those powers has to be exercised in that way only or not at all. All other modes of performance are necessarily forbidden. This is what Supreme Court has expressly said in case of Hukum Chand Shyamlal, para number 18. You will refer this. This second preposition, it's nothing new about it. If done so, it will be treated as a violation of principles of natural justice, fundamental principles of natural justice. You will find numerous judgments on this. I am just quoting one another, Babu Varghese versus Bar Council of Kerala, para number 31. The same aspect has been reiterated in the different terminologies. It is a basic principle of law that if the manner is prescribed to do something, then that act has to be done in that manner only, not otherwise. Not permissible to do by any other mode. Fine? With these 2 fundamental principles, that collection must be lawful, not only levy. The second aspect, that if law provides a manner to do something in a particular manner, then it has to be in that manner. I think we all agree on it. Correct, na? So these 2 fundamental principles. Fine. Our GST law has this 3 stages mechanism. First of all, there will be any inquiry or investigation, then there will be an adjudication, then there will be recovery. Recovery cannot precede adjudication. Recovery cannot happen during investigation. What are the modes provided in the GST law for investigation? There are total 5 modes of provided in the GST law for any kind of investigation. Just to touch upon, number 1, scrutiny under section 61. Number 2, audit under section 65. Number 3, summon under section 70. Number 4, inspection under section 67 subsection 1. Number 5, search and seizure under section 67 subsection 2. Since today it's not my subject, so I am not entering into detail of them. But please mind, these are the only 5 modes by way of any investigation or inquiry can happen under GST law. There is not 6th mode. Many a time we act upon phone calls of the officers. किसी लॉ में कभी भी ऐसा कोई तरीका प्रोवाइड नहीं किया.
Coming to the GST law, many a time you will see some kind of letters are being issued by that officer that okay, you provide these details to us. Maybe so-called notices are there. That these notices are there, provide these details to us. First check which kind of power they are exercising. Please mind the 5 which I have already discussed with you, just touched upon. These all 5 kind of investigation or inquiry are having their different scope. Scrutiny has altogether different scope. Audit has altogether different scope. Different power, different scope. What department can do, what they are expected to do. All are different in all these 5. They are not identical. But one thing is common. These all 5 are different modes of inquiry. But please mind, it is one thing is common in none of the cases. Final assessment happens. Adjudication doesn't happen in either of them, either of the 5 methods of investigation provided in the law. Either of the 5 inquiry proceedings provided under the law. No final adjudication can pass, no recovery can happen, no demand can be created. If the officer thinks that the investigation exercise, or maybe this, you can term it as a fact-finding exercise, or maybe information-gathering exercise, the result of scrutiny, audit, inspection, summons, search and seizure, whatever mode they have exercised their powers, the outcome is that taxpayer has either not paid the taxes, or short paid the taxes, or has taken erroneous refund, or there is a wrongful availment of ITC or wrongful utilization of ITC. These 5 things are there in the law. If outcome of these inquiry proceedings is this, in that case, adjudication will start. In that case, adjudication will start. And before starting the adjudication, the concerned officer who investigated, who has made the case, is under obligation to decide one more thing. Is under obligation to observe that this non-payment, short payment, wrongful availment of ITC utilization, erroneous refund, whether this is because of fraud, willful misstatement, or suppression of fact. Answer is yes or no. If the answer is yes, then the proceedings will be under section 74. If answer is no, then proceedings will be under section 73. That is bona fide non-payment of taxes. Now, henceforth, all these 5 things I'll say non-payment of tax instead of repeating all 5. So, whether this non-payment of tax is bona fide, 73, whether this non-payment of tax is due to fraudulent, misstatement, suppression of fact, in that case, 74. This is what all people know. But just to brush up, to come at a same platform, this is what the foundation of or structure provided in our statutory provisions. This is what I wanted to discuss with you on today. When assessment, adjudication, इसमें किस तरीके से क्या-क्या चलेगा. But I would like to focus on 2 aspects mainly. अभी last September month में there was tsunami of notices were there. Correct? No? Everyone must have received. Multiple notices were there. जिसको नहीं रिसीव हुआ है उनको प्लीज अपने क्लाइंट्स को बोलिए चेक कीजिए GSTN पोर्टल. You'll get to know that notices are there to almost each and every person. I normally compare this the way department has issued notices like any pandemic for a medical profession. We have witnessed some
pandemic in 2020, 2021, what used to happen? What happened at that point of time? Doctors were working a lot, undoubtable. इसमें कोई डाउट नहीं, हैंड्स अप, बहुत वर्क किया उन्होंने, पैसा भी बहुत बना। आप चाहे डॉक्टर की बात करो, आप चाहे फार्मा कंपनीज की बात करो, आप चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करो, मेडिकल फील्ड से जो भी रिलेटेड था, उन सब ने जबरदस्त पैसा बनाया, अभी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। जो वेल्थ क्रिएशन पिछले 2020, 2021, 2022 में हुआ है इस फील्ड का, वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। आपको डॉक्टर्स भी ऐसे, उस टाइम जब आप याद कीजिए, जब आप डॉक्टर से मिलते थे, डॉक्टर्स कैसे काम करते थे? अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक उन्होंने वो आपको कहते हैं आप तो घर में बैठे हो, हम तो वो पीपीई बैग पहन के फिर काम कर रहे हैं। सो कितनी डिफिकल्ट लाइफ थी। सो अभी क्या होने वाला है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में? सेम सिनेरियो, सबके पास फ्लड ऑफ नोटिसेज है। अच्छा, प्लीज रिमाइंड यू, अलाउ मी टू रिमाइंड यू कि ये फ्लड बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ने वाला है? इट वॉज अ टाइम बारिंग फॉर 17, 18, 73 नोटिसेज, करेक्ट ना? करेक्ट ना? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। इनके एडजुडिकेशन कब होगा? इनका ऑर्डर कब तक पास हो जाएगा? अरे सर ऐसा मत कीजिए, संडे ऐसा मुझे थोड़ी, बिल्कुल नहीं। 6 दिन दिमाग चलता है, ऐसा थोड़ी होता है। इनका एडजुडिकेशन कब पूरा होगा? 31 दिसंबर तक इन सबके ऑर्डर पास होने। तो ऑर्डर पास होने से पहले आपको रिप्लाई भी करना है, पर्सनल हियरिंग भी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ होगा, बट जो भी होना है 31 दिसंबर तक सारे केसेस निपट जाएंगे। फाइन, 31 दिसंबर तक एक काम और होगा। The way you have received notices for 17, 18, the time barring for 18, 19 is 31st December. So 31st December is time barring for notices to be issued for 18, 19 and passing of the order under section 73 for 17, 18. So जो अभी देखा था इससे ज्यादा होने वाला है। Now let's talk about next 3 months. March 2024. What's going to happen? Time barring for conclusion of the assessment proceeding of 18-19 and time barring for issue of the notice under section of for the year 19-20. So actually there is a flood of work, I can tell you, and each and every chartered accountant is going to be very, very busy. And the important aspect here is we need to gear up, we need to skill up ourselves how to handle these notices. Today I am not going to discuss इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा, something, what is correct tax rate, what is exemption. No, today's my topic is not that one. What I will be discussing will be applicable on each and every case. Probably madam is dealing a particular case whereby MIDC plot is sold by one person to another, whether tax will be levied. This is what her headache. But what I am going to tell you, irrespective of the fact whether tax is leviable or not, I'm sure you'll get you'll be better equipped to handle your case. Whatever department feels. I'll be discussing only and only 2 principles now. जितना भी टाइम मुझे परमिट करेंगे आप लोग, उसमें सिर्फ 2 प्रिंसिपल बात करने वाला हूं. Principles of natural justice. How many principles of natural justice are there? 2. Everyone knows it. Correct na sir? Correct me if I am wrong. अरे कोई बोलने के मूड में नहीं है संडे. Is it written somewhere? If I say somewhere, answer is yes. But is it written in any of the statute? Answer is no. It emanates from Article 14 of the Constitution of India. I'll go one by one. First principle of natural justice. What is first principle of natural justice? Can anyone tell me?
Sorry? So you are answering me whether first principle of natural justice or why principle of natural justice are there? Sir has said something. That's a good way to say whatever proceedings are going on, be it judicial or be it quasi-judicial, that's very important. Be it judicial or quasi-judicial, the process has to be judicial. The process has to be fair. This is what principle of natural justice, if someone wants to explain in one or two lines. The proceedings has to be fair. Now, how proceedings will be treated as fair, I am going to discuss that. First principle of natural justice is rule against bias. Rule against bias. In Latin it is called as nemo juris in causa sua. Some jurists call it as nemo juris in re sua. Meaning thereby, prosecutor cannot be the judge. No one can adjudicate a case or a cause in which he is interested. One of the most important principles, rather first principle of natural justice is this one. Honorable High Court, Andhra Pradesh in B. Rajagopalachari has clearly explained this aspect. First and foremost important principle of natural justice is human rights also. No one can be judged in his own cause. इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए I have to come back to my question which I have asked. Assessment and adjudication. What is assessment? Section 2, subsection 11 of the GST law defines assessment. In a very simple manner, the way we understand. The way we all understand is assessment. Law says assessment means determination of tax liability. आप वो जो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन बना रहे हैं, that is also assessment. इतना आउटपुट हुआ, इतना इनकम हुआ, इतना डिडक्शन, इतना टैक्स लगा, इतना रिबेट मिला, इतना प्रीपेड है, इतना और पे करना, that is assessment. जीएसटी में इतना आउटपुट था, इतना इनपुट था, ये टैक्स रेट अप्लाई किया, ये एग्जेम्पशन, ये आईटीसी रिवर्सल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, you computed the tax. That is what assessment. Now, whether you did it, officer did it, or some third person did it, law is silent on it. Whosoever does it, whosoever determines the tax liability, it is a assessment. Quite possible. Self-assessment. What is self-assessment? Assessing himself does it, the computation. Assessing himself does the determination. Now, what happens if the case is under scrutiny or an audit? What's going to happen? Department will compute the liability. As per their understanding, what is correct determination of tax, they will do it. So this is assessment by them. Let us assume the case has been referred to a special auditor. What a special auditor will do? He will also determine the tax liability. Then that fellow is doing an assessment. So whenever there is a computation of tax liability or a determination of tax liability, that is an assessment. It is as simple as that. Now, what is adjudication? See, in this era of technology, I expect कि हमारी एटलीस्ट जो यंग ब्रिगेड के लोग यहाँ पर हैं, वो अभी तक तो गूगल पर सर्च करके ढूंढ लेना चाहिए. अच्छा, आपने एक और ऊपर चढ़ा दिया. Assessing the correctness of that assessment, that can be a very good way to express. Okay, let me take a simple and very, very simple example to understand it. Keeping in mind this is Sunday. You लोग अगर लाइटर मूड में रहना चाह रहे हैं, नॉट बहुत ज़्यादा फ्लडेड नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स है. लेट्स से आज यहाँ पर एक चोरी हो जाती है. लेट्स से हम सब लोग यहाँ बैठे और इंस्टीट्यूट की प्रीमाइसेस जो यहाँ के आसपास है, पीछे से कोई आदमी कुछ सब्जेक्ट, कुछ आर्टिकल्स चोरी करके ले जाता है. व्हाट गोना हैपन आफ्टर दैट? क्या होगा उसके बाद? एफआईआर तो लॉन्च करेंगे. आप एफआईआर लॉन्च कराने वाले. जब आपने एफआईआर लॉन्च करेंगे, क्या होगा? पुलिस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी.
करेक्ट है ना? पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस ने बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट किया, लेट अस से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा, डायरेक्टली चोरी करता हुआ तो कोई नहीं मिला, आसपास से जाते हुए 3-4 लोग मिले, उन तीनों चारों को और आगे पीछे ट्रैक किया, ठीक है, उनको तीनों चारों को अपने यहां पर बुलाया, सम्मन देके उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। पुलिस को डाउट हुआ 3 में से 2 लोगों के ऊपर, तो उनके घर पर जाके सर्च मारी, करेक्ट, फिर वापस देके नोटिस देके बुलाया, क्वाइट पॉसिबल एक आध को बीच में अरेस्ट भी कर लिया। बट एनीवे, एंड ऑफ द डे पुलिस केम टू कंक्लूजन दैट दिस इज मिस्टर एक्स। पुलिस केम टू कंक्लूजन दैट दिस इज मिस्टर एक्स जिसने की चोरी की, करेक्ट। ये फैक्ट्स हम ले लेते हैं। अभी क्या होने वाला है इसके बाद, जब व्हेन पुलिस केम टू कंक्लूजन मिस्टर एक्स है जिसने चोरी की, अभी क्या करेगी पुलिस? सॉरी, कोर्ट में लेके जाएगी ना, करेक्ट, थैंक यू। हाँ, मतलब कोर्ट में लेके जाने का वही कहना चाह रहे हो कि चार्जशीट फाइल की। आपने जो आप बोल रहे थे उसी को टेक्निकल वर्ड दे दिया। पुलिस विल फाइल अ चार्जशीट, कहां फाइल करेगी? कोर्ट में, करेक्ट है ना? पुलिस ऐसा तो नहीं करेगी भाई चलो तुमको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। पुलिस ऐसा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। थैंक यू वेरी मच सर। सभी लोग मेरे साथ ही है ना इस पॉइंट के ऊपर। पुलिस ये तो नहीं कहती कि चलो इसको 2 साल की, इसको 3 साल की, इसको 4 साल की सजा सुनाई, क्योंकि इसने चोरी की थी, इसने चोरी में हेल्प की थी और इसने ये मास्टरमाइंड था। What next they can do is they will file a charge sheet. As per their understanding, Mr. X is culprit. और why we please this is important. जब चार्जशीट पुलिस फाइल करेगी, पुलिस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू अटैच ईच एंड एवरी एविडेंस on the basis of which they came to conclusion that Mr. X is a thief. जैसे कि उनको चार्जशीट के साथ में ये लगाना पड़ेगा कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग जब देखा तुमने इधर से उधर गए, जैसे कि उनको बताना पड़ेगा संबंध में हमने बुलाया और संबंध में उसने ये कहा, जैसे कि कोई भी एविडेंस जिसके ऊपर की थर्ड पार्टी ने हमको ये स्टेटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ चार्जशीट के साथ होगा। प्लीज माइंड, अगर चार्जशीट के साथ में वो जो एविडेंस नहीं है, दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन in the case. I'll come to GST one by one. I think ज्यादातर लोग कैच कर रहे हैं मैं कैसे लेके जाना चाह रहा हूं। So पुलिस जो चार्जशीट फाइल कर रही है, उस चार्जशीट के साथ सारे एविडेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे पुलिस came to this conclusion कि मिस्टर एक्स इज अ thief। अगर कुछ भी एविडेंस छूट गया, then that evidence will not be, वो उस एविडेंस को बाद में नहीं ला पाएंगे और उसका एक बड़ा सेट प्रोसीजर होता है कैसे उसको लेके आ पाएंगे। ठीक, अभी जब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में बिफोर ट्रायल उससे पहले एक स्टेप होता है, मैं डेलिबरेटली उसको छोड़ रहा हूं, वहां सिविल प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अदरवाइज आपके लिए। सो लेट्स से कोर्ट में क्या होने वाला है, कोर्ट में क्या होना है, पुलिस एक पार्टी है, पुलिस क्या कह रही है, एक्स ने चोरी की, करेक्ट है ना, और प्रोबेबली एक्स क्या कह रहा होगा, मैंने नहीं की। एक्स ये थोड़ी कहेगा कि उसने की, एक्स क्या कहेगा, मैंने चोरी नहीं की, करेक्ट है ना। हु विल डिसाइड दिस? जज साहब, करेक्ट है ना, सब लोग एग्री करते हैं। अब आ जाते हैं एडजुडिकेशन। जब आप एडजुडिकेशन टर्म इज नॉट डिफाइंड, असेसमेंट टर्म इज डिफाइंड, एडजुडिकेशन टर्म इज नॉट डिफाइंड, बट when you go to dictionary meaning, more specifically legal dictionaries, you will find different versions are there, but it will come to a common thing. That common aspect is giving a decision on an issue, passing an order or judgment or decree in a dispute between two parties. अभी जो जज साहब हमारे उस केस में करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, एक जजमेंट या ऑर्डर पास करने वाले हैं कि ये डिस्प्यूट है किसके बीच में, पुलिस के बीच में और एक्स के बीच में। हमारे जो एग्जांपल लिया, इट मे बी अ सिविल डिस्प्यूट एज वेल, दो लड़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसके बीच में जब दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं। दिस जजमेंट इज कॉल्ड एज, कि ये वो प्रोसेस को कहा जाता है एडजुडिकेशन ब्रॉडली। If it is the first stage, then it will be called as trial. Otherwise, broadly, this is the adjudication. तो ये जो जज साहब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एडजुडिकेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? There is a dispute between two parties. Police is saying कि भाई X ने चोरी की है, X is saying मैंने नहीं की। This is the dispute ना, इसके ऊपर जजमेंट दे रहे हैं जज साहब।
सॉरी, अभी जीएसटी में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिमाग में रखिए कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जैसे ही ये पता लगा कि टैक्स का नॉन पेमेंट है आउट ऑफ एनी ऑफ द 5 प्रोसीडिंग्स, then one has to come to the conclusion they will have to start either 73 or 74 depending upon facts. I have already discussed that. Fine. So ये जो 73 और 74 हैं, these are adjudication proceedings as law itself mentions the same. First of all, if you go to the term adjudicating officer, GST law में बहुत clearly उसको define किया, जो भी order pass कर रहे हैं वो adjudication के तहत होंगे. Then if you will go to section 75 subsection 10, it specifically refers that the proceedings under section 73-74 are adjudication proceedings. You can please check that at bottom, 75 subsection 10. Adjudication under section 73-74. Adjudication के लिए जो मैंने अभी तक डिस्कस किया उसकी बेसिक एलिमेंट क्या है? There has to be at least there has to be 2 parties in which among them there is a dispute and judge is a separate person. The person who is adjudicated is the other different one. So at least there has to be 3 persons, including judge, including adjudicator. There has to be 3 persons. Until unless there is 3 persons, there cannot be any adjudication. ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको पिक्चर के थ्रू समझाना चाहूं तो ये हो रहा है असेसमेंट। वो 143(2) का नोटिस आया कि ये चीज लेके आइए, आप जाके बता रहे हैं ऑफिसर को, वो जाके उसके ऊपर ऑर्डर पास कर रहे हैं। दिस इज एडजुडिकेशन। 2 लोगों के बीच का कोई झगड़ा था, उसके ऊपर तीसरा आ रहा है, तीसरा बोल रहा है कि हाँ भाई ये मैं बता रहा हूँ क्या है, ये जो लेडी जो फोटो में दिख रही है आपको ये बता रही है कि आई विल डिसाइड कि तुम लोगों में से कौन ठीक है। सो एटलीस्ट देयर हैज टू बी 3 पर्सन्स। अब आप अपने केसेस याद कीजिए जो अभी तक लास्ट 6 साल में किए हैं। क्या ऐसा कभी हुआ नहीं कि नोटिस स्क्रूटनी का एक्स ऑफिसर ने दिया, आपने उसको जवाब दिया, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिस्पॉन्स, देन ही हैज इश्यूड द शो कॉज नोटिस? हुआ नहीं हुआ सर? हुआ। क्या ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक केस आपका ऑडिट में लिया गया, audit under section 65 was conducted, you have responded to best of your legal skills, knowledge of the law, कि भाई मेरे साथ he is saying आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, you are saying क्रेडिट मिलेगा। He concludes in his deficiency memo कि नहीं, we are not satisfied with the response of the assessee. Let's take a live example. Let's say you are a simple trader. You bought a small transportation vehicle, वो छोटे आते ना, क्या बोलते हैं सर उसको, छोटा हाथी टाइप या टाटा वाला जो छोटे vehicles आते हैं, whatever. So you bought that vehicle, you claim the credit. अब वो हमारे ऑफिसर तो बैट वाली मानसिकता से हैं, वो कहते नहीं ये आपने बेचा नहीं इसलिए no credit for it. While audit was going on, you explained to him, sir, there is a section 16 subsection 1 which clearly says any goods on which you have paid GST or you have charged with the GST which is used or intended to be used in the course or furtherance of business, GST will be available. And this term business is defined in section 217 in a very, very broad manner. So this truck is being used or this transportation vehicle is being used for the purpose of GST business only. So credit is eligible. Then he says, no, वो 17(5) में there is a rider. कि vehicle का नहीं मिलता right. Then also he explained, there is a rider 17(5)(a), but there is an exception to it, and this transportation of goods is an exception to it. So you will get a credit of it. The assessee will get a credit. Assessor officer says nothing doing. He raised a deficiency memo कि इन्होंने credit गलत दिया. Deficiency memo raise होने के बाद भी आप उसको detailed पूरा reply देते हैं कि भाई if so due to so and so, so and so, so and so reasons, credit is eligible to the assessee. That officer finalizes the audit report, ADD 02 आपके पास आ जाता है कि हाँ भाई इसके ये गलत क्रेडिट दिया। अभी क्या होता है, शो कॉज नोटिस इश्यू हो रहा है,
ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा कि जो ऑडिट कर रहे हैं वही आदमी शो कॉज दे रहा है? जो आदमी 2 बार पहले आप जिसको समझा चुके हो वो नहीं समझ रहा, तो वो शो कॉज के जवाब में कैसे समझ जाए? डू यू एक्सपेक्ट हिम कि आपके वो थर्ड रिप्लाई अगर समझ जाएगा तो उसकी पुरानी प्रोसीडिंग खराब हो जाएगी? नेक्स्ट इश्यू इसी तरीके के कितने अलग अलग आप ले सकते हो। लेट्स सी, एक जगह के ऊपर सर्च हुआ, मे बी DGGI, मे बी स्टेट एनफोर्समेंट एंड एंटी इवेजन, वॉट एवर बी द विंग इज, उन्होंने आपके यहां सर्च किया, दिस कंडक्टेड समथिंग समथिंग समथिंग, उसके बाद समन दिया, समन के बाद बुलाया, वही आदमी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था आपके अगेंस्ट में वही शो को दे रहे हैं और वही कह रहे हैं हमें बता दो पास करते हो। इज इट फाइन? It is absolutely not fine. It is clear violation of first principle of natural justice being homogeneous and so on. Please mind it. The officer who was involved in any kind of investigation cannot decide the case, cannot adjudicate the case. This is what first principle of natural justice. I have raised this issue at multiple forums, multiple high courts, and I can say, touch wood, in a first hearing at all the times, I got relief from the court. In the first hearing itself. And see, very interesting thing I must share with you, that in all the replies which I received in response to my petitions, one thing was common. Everyone says principles of natural justice are important, they have to be adhered, but say this principle doesn't apply on tax laws. When hearing was going on, the opposite counsel said this principle doesn't apply on tax laws. I raised a simple one-word question: why? There was no answer. That is the reason I got a interprotection in all the cases. I raised a simple question: why? Then I went on to explain principles of natural justice doesn't see whether it is a criminal proceeding, whether it is a civil proceeding, or a tax proceeding, or some other proceeding. This is what the basic essence of any law administration, and it has to be followed. Please refer judgment of Honorable Supreme Court in case of Ashok Kumar Yadav. Para number 15, Honorable Supreme Court clearly says that principle of biasness, rules against bias, that is principle of nemo jurisdiction causa sua, applies with all rigor to all the authorities, including quasi-judicial and even on administrative authority. They explained it is not only for the courts to administrate it, it's not only for judicial authority, it squarely applies on quasi-judicial and even administrative authorities. This aspect was taken, जो मैं आपसे एक B Raja Gopal, this is one Ashok Kumar Yadav, which is there on your screen. You can read it if you want. The basic principle underlying this. It is appropriately extended to all cases before this line is. It is also important to note that this rule is not confined to cases where judicial power restrictive also is exercised. It is appropriately extended to all cases where an independent mind has to arrive at a fair and just decision between the rival claims of the parties. Justice is not the function of the courts alone. It is also the duty of all those who are expected to decide fairly between contesting parties. Are not your EOs supposed to act fairly? B. Raja Gopal. In this case, you can see para 23. The rule against bias with all rigor applies to courts, tribunals, judicial proceedings, quasi-judicial proceedings. BCI Industries, very interesting judgment of the GST law. अभी मैं आपको इसके फैक्ट्स बताता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उससे बहुत वीकर फैक्ट्स हैं जो मैं केसेस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. Now what happened in this case, let me explain you. One adjudication order was passed under the GST law by one officer in favor of the citizen.
You know that there is a procedure of filing of appeal by the department. So that happens on the recommendation of the commissioner. Correct? So on the commissioner reviewed that case and recommended filing of the appeal against that order. Favorable order to the assessee. Now what happened? It's a matter of chance that that commissioner and the appellate authority was husband and wife. So that appeal filed by the department went before commissioner appeal, who happens to be wife of the commissioner who recommended that you file the appeal against this order. So matter is before Honorable Punjab High Court under the GST law. So Punjab High Court in crystal clear terms says that rule of bias is clear. There is no need to demonstrate that there is actual bias. Please mind, that's very important in this rule. Even Ashok Kumar Yadav, B. Raj Gopal, you will find so many judgments on this. In this rule, it is not required to demonstrate that there is a bias. Likelihood of or possibility of bias is sufficient. This is technically called as rule of external appearance. बाहर वालों को देखने से कैसा लगा है? अच्छा वो कमिश्नर साहब ने रिकमेंड किया है अपील, उनकी वाइफ इनको सुनेगी तो वो तो वही करेंगी ना जो something you got it. So if someone can show that there is a likelihood of bias, it's sufficient to apply this rule. और जो केसेस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं हमारे जीएसटी में हो रहे हैं, if you count 100 cases, out of 100 you will find at least 25-30 cases are this one, whereby the officer who himself investigated, who himself part of the investigation team, who himself conducted audit, who himself scrutinized the assessee, who himself audited the assessee, is going to pass the order, which is absolutely illegal. Just to demonstrate this principle with one or two more judgments in the GST law. See, the GST law problem is, principles of natural justice are universal principles. We have to apply on each and everything. But court judgment आने में time लगता है. It's nearly 6 years GST has implemented. पहला साल है जब ये अभी शो कॉज पास हुए, अभी तो पहले साल के भी 73 के भी टाइम बारिंग नहीं आया अभी ऑर्डर पास करने का. So court judgments आने में time लगता है, but फिर भी fortunately we have couple of judgments. In one of the cases, what happened in Delhi? One search has been conducted at the by the GST officers at the premises of the assessee. One of the officer was part of the team, namely Mr. Chunnilal. So the Chunnilal ji, he was part of the search team. Going forward, as per their monetary limit, etc., finally the case was adjudicated by Mr. Chunnilal. Any order pass किया किसने? चुनीलाल. Matter reached to Delhi High Court immediately on this ground only. On this ground only. On the very first hearing, Honorable Delhi High Court said, prima facie there appears violation of principle of natural justice, so order is stayed. On the first hearing. On the next hearing, in fact, government considered, yes, we agree to it that there appears somewhere. So they took some time again and again, and they ultimately they came up before the court and said that we will review our policy, that it appears that this is wrong. This is a judgment from the Delhi High Court in case of Swastik Plastic. Swastik Plastic versus Commissioner of DGST. Finally, on 26 September 2022, the High Court quashed the order, which was passed by Mr. Chunnilal, who was part of the investigation team. On the similar grounds, जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, अगर if you want to refer, you can refer that. Interim stage के ऊपर है, interim order जिनमें मिला हुआ है बहुत clearly. Audit किया X आदमी ने, और वो ही आदमी जाके adjudicate करना चाह रहा है. Show cause notice उसी ने issue किया recently 2 or 3 months ago. He issued show cause notice. I have gone to the High Court, Rajasthan High Court. I have specifically demonstrated that मैंने audit में इसको समझा लिया, ये नहीं समझा. By what? But can anyone think now he will understand? I could agree to me, and they have given the interim protection in case of Kaushal Pharma on the very first hearing from Rajasthan High Court. Similarly, what happened in case of another case, Madhya Pradesh High Court,
Ecnosis Info Systems. In that case also, similarly, order was passed. Rajasthan case, order was not passed, only show cause notice was there. In case of Madhya Pradesh, which I am explaining, the order was passed by the very same person who does the scrutiny. The lady assistant commissioner was there who does the scrutiny, who passed the scrutiny, who completed the scrutiny and then issued the show cause notice. I showed this aspect again. I said no, nothing doing. They are prima facie. It appears that they cannot do the assessment from the maybe 3-4 months ago. So they cannot do. Same happened in Andhra Pradesh, Uttarakhand, every place same things are happening. Anyways, so going to another aspect. So one aspect which I wanted to make it clear: first principle of natural justice is nemo juris in causa sua, that the person who has who was a part of investigation by any means, they are not permissible to adjudicate the case. आगे बढ़े सर? Second principle, yes. Any question on the first principle? In the case of Income Tax Act, the person who is assessing under Section 143 Notice under Section 143(2). Yes, please go ahead. An assessment scrutiny happens and all, and the same person will be issuing show cause notice and will be passing the order, which is the assessment order, and then later on the assessee being agreed can go to the appellate authority for second, as the case may be. So in this case also, do you see the person who is assessing is also passing the order and there is violation? One may make a claim of it, but I am not sure whether that will be very certain. Let me give you example under the GST law of the same. Similar example whereby you cannot claim it. You can treat the case pari material to 143. For example, one officer has issued a notice under Section 73 directly, without any audit, without any scrutiny, which you must be aware that all high courts, most of the high courts has upheld that can happen, including Bombay, including Madras, including Gujarat. So if that happened, where is the question of bias? So this is the same case 143(2). But let's change the scenario in income tax itself. Let us say 132 happened under the income tax law. 132 happened under income tax law, search has happened. Maybe survey has happened under the income tax law. In that case, you will observe, normally, once the case gets completed, the file gets transferred for assessment to another. This is what observance of principle of matter. If they doesn't do so, then you have every right to get protection from this particular, the principle which I discussed. Okay, let me tell you one more thing. Very interesting aspect. I just recollected from your question. Let's say audit was conducted by Mr. A, who happens to be Assistant Commissioner, State Tax, so and so ward, so and so circle. Correct? Audit was completed, or everything was ADD 01 issued, so many issues, requisition issued, answers received, responses received, deficiency memo issued, audit completed. Audit concluded by Mr. A, Assistant Commissioner, State Tax. Fine. Now what happened immediately after that, he got transferred to some different place. And instead of him, Mr. B comes at this place. Instead of him, Mr. B comes to he joins as the Assistant Commissioner, same ward, same circle, who conducted audit. Now, can Mr. B issue the show cause notice? You can, sir. This same question was asked to me by Honorable Rajasthan High Court, where I was arguing this aspect. The phaseless scheme, yes. My answer is neither A can issue nor B can issue. Not only here, if A got transferred to some place and now neither A can be designated as adjudicating authority nor B can issue. This principle goes in persona or in incumbents both. So then who will
Then who will issue? थर्ड पर्सन कमी है क्या ऑफिसर्स की? But then they have the charges, no? Sorry? They have the charge of. Madam, if you will, I'm sure you will agree with me. Ideally, the structure of the department is, one is the administrative wing, another is the audit wing, third is the enforcement wing. This is what the structure all over India, most of the places. So if the audit is going on, it should ideally be done by the audit wing. Once the audit gets completed, in my humble opinion, correct procedure, they should transfer the case to admin, just like income tax does. Once investigation is done, maybe under 67, 1, 2, whatever, search, inspection, summon, whatever has to be done, let's say the case is made by the enforcement, then once their investigation gets completed, they should transfer the case to admin for adjudication. Central This is circle. what the correct way. As sir is also saying, you all will agree with me, whoever has handled central anti-evasion or DGI, whenever they make a case, whenever they issue the show cause notice, what they do? They say you are required to show cause before so and so officer, not before me. You will find in each and every show cause notice, central government, central officer, what they do? Central anti-evasion, DGI, central audit. They say now you are supposed to go before so and so authority to show cause. Whereas most of the time state authorities are saying you are supposed to show cause before me. यानी कि मैं ही पुलिस हूं, मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, मैं ही सजा दूंगा तुमको. Are you getting my point? This is what the principle which I try to highlight. Anyways, second principle of natural justice. The beauty of the GST law, I will say, कि ये जो प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, खास तौर से दिस सेकंड प्रिंसिपल, ऑडी अल्ट्रम पर्टेन, ये पहले हम लोग सारे जजमेंट्स के थ्रू बात करते थे, ज्यादातर केसेस थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस. बट अब जीएसटी लॉ जो ड्राफ्टिंग हुई है, उस लॉ में ही ज्यादातर एस्पेक्ट इस प्रिंसिपल के डाल देंगे. सो वी हैव अ बेटर फुटिंग कि जो भी हम पॉइंट रेज कर रहे हैं, जो भी हम क्लेम रख रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर टू बी are supported by statutory provisions that ज्यादातर उनमें से. एक एक करके बात करते हैं ना. what is the meaning of this principle? This is Latin term, ऑडी अल्ट्रम पर्टेन. ये सबको पता है, सबने पढ़ा होगा, वो कोरिलेट नहीं कर पाते ना. No person should be go unhurt. Very good, thank you. वही सर जो आपने कहा था फेयर हियरिंग. Principles of natural justice is all about fair hearing, fair procedure, that's it. Though so it's a Latin term, English या हिंदी नहीं है, मराठी भी नहीं है, वो मुझे भी समझ नहीं आता. First of all, let us understand इसका मतलब क्या है. Meaning of this term is hear the other side. Hear both the sides. एक साइड की बात सुन के डिसीजन नहीं करने का. आपके सामने when you are adjudicator, when you are judging, you have two parties. Hear both of them. And one most important aspect, please read the bottom line. This is most important aspect of this principle. Every person has a right to get the charges explained him clearly. आपके अगेंस्ट में क्या चार्ज है, क्या एलिगेशन है. जो आपको याद होगा, मैंने बात आपको बड़ा स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करके बताया था कि चार्जशीट जब फाइल हो रहा है तो चार्जशीट के साथ में सारे एविडेंसेस भी लगेंगे. If the police has made that opinion that Mr. X is a thief, so उन्होंने वो ओपिनियन किस बेसिस पर बनाया, वो सारे के सारे एस्पेक्ट उसमें होने चाहिए. ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, उसके बिना ये पर्पल आगे सर्व नहीं करेगा. Normally, I don't refer circulars because circular is not the law. We all understand that. But this one is beautiful. March 2017, government issued a master circular under the erstwhile GST law, erstwhile laws, tax laws, जहां पर उन्होंने ये बताया कि शो कॉज नोटिस कैसे बनना चाहिए एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के.
अभी जो हमने डिस्कस किया था इससे पुराना पहला वाला प्रिंसिपल रूल अगेंस्ट बायस, आप देखेंगे ये सर्कुलर में उसको बैठ कर रहा है। एक सर्कुलर में क्या क्या, एक शो कॉज नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है हु इज गोइंग टू एडजुडिकेट द केस, ये शो कॉज नोटिस में लिखना चाहिए। जब आप उसके डिटेल्स पढ़ेंगे तो वो साफ बोलता है ये वाली चीज, जो शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है वो बताएगा कि कौन एडजुडिकेट करेगा, वो अपने लिए नहीं बोलता। ही नीड टू आइडेंटिफाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Anyway, having primarily discussed this principle, I have tried to identify some 15-16 situations जो कि इस फ्लड ऑफ नोटिसेस में कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द लॉ इटसेल्फ। लॉ से सपोर्ट नहीं भी होगा तो भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अपनी डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस के ऊपर आप कहीं भी आगे जा सकते हो। तो लेट्स गो वन बाय वन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मैडम, अगर MIDC का कोई नोटिस आता है कि आपने टैक्स नहीं दिया और आपको ये डेफिशिएंसीज मिलती हैं, सो यू कैन बैंक अपॉन देम एज वेल अपार्ट फ्रॉम योर मेरिट्स ऑफ द केस। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is DRC 01? I just want to understand from you. What is DRC 01? Anyone? Any volunteer? Quickly, please. Intimation of voluntary. What is DRC 01? Intimation of voluntary payment. Sorry? Intimation of voluntary payment. Hey, I'm saying 1, not 3. That is 3, what you are saying. What is DRC 01? Madam, यहाँ तक नहीं पहुँचा, आगे आइए। Intimation of tax being ascertained payable to the department by the assessee. That's DRC 01A, what you are saying. I'm saying, what is DRC 01? DRC 01 is SCL. SCL, okay, thank you. Anyone else? Anyone else? What is DRC 01? सर ऐसा मत करिए। सॉरी? अरे सर ऐसा मत करिए। शो कॉज नोटिस। I was expecting that everyone will say show cause notice. This is what a wide understanding. But please mind, this is not show cause notice. Please read the rule carefully. Please read the rule carefully. What it says. Rule 142(1). It clearly says, when the case is to be weighed out under section 73, 74, 128, 138, etc., then the proper officer shall serve the show cause notice. Then the proper officer shall serve the show cause notice along with summary of show cause notice in DRC 01. इसमें रिफ्लेक्टर काम नहीं कर रहा है। एनीवे, notice issued under so and so, a summary thereof electronically in form DRC 01. What does that mean? शो कॉज नोटिस अलग है, DRC 01 अलग है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग पर्पस है। DRC 01 इज अ एनक्रिप्शन और अ समरी ऑफ दिस शो कॉज नोटिस, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर, कुछ नोटिफाइड पर्टिकुलर्स आएंगे कि भी आपका जो समरी है टैक्स इंटरेस्ट, उसमें मेरिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें यह आएगा कि आपकी समरी में टोटल CGST, SGST, IGST में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कोई फीस और एनी अदर सम क्या हम डिटरमाइन कर रहे हैं, आपकी किस डेट तक आपको रिप्लाई फाइल करना है, कौन सी डेट आपकी पर्सनल हियरिंग की होगी, समथिंग समथिंग। दिस इज व्हाट DRC 01। एंड व्हाट इज शो कॉज नोटिस, जिसमें आपको पूरे केस के फैक्ट्स, लीगल पोजीशन, लिमिटेशन और आपका चार्ज आपको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप यू कम बिफोर अस टू एक्सप्लेन। करेक्ट? दिस इज व्हाट शो कॉज नोटिस। तो दीज आर टू सेपरेट डॉक्यूमेंट्स, प्लीज माइंड इट। अभी प्रॉब्लम क्या है, और आप जाके देखेंगे जब अपने आज तक जितने भी केसेस आपके पास आए हैं, आई एम श्योर यू विल फाइंड एट लीस्ट इन 40-50% केसेस दिस डेफिशिएंसी कि DRC 01 नहीं आता है, सिर्फ शो कॉज नोटिस आ गया। सिर्फ शो कॉज नोटिस आया, कैसे आया की बात अलग से करेंगे। सिर्फ शो कॉज नोटिस आया जिसमें आपको सारी रामायण लिखा है, सारा चार्ज एलिगेशन है, बट देयर इज नो DRC 01। अभी सर हमने जो प्रिंसिपल 2 जब अपने सेशन स्टार्ट किया था, 2 प्रिंसिपल कॉन्क्रीट किए थे। सेकंड प्रिंसिपल, इफ लॉ प्रोवाइड्स
that power is to be exercised by certain officer in certain manner, in that case it has to be exercised in that manner only or not at all. All other modes of performance are necessarily forbidden under Supreme Court in case of Hukum Chand Shamla. याद है ना सर? तो लॉ में स्पेसिफिकली क्या लिखा गया? रूल 142(1) से शो कॉज नोटिस के साथ में आपको उसकी एक समरी DRC 01 में देनी है. आप जब जाके देखेंगे इस एंगल से वापस से तो ज्यादातर में यू विल फाइंड नहीं मिलेंगे, DRC 01 नहीं मिलेगा. तो दैट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. लॉ में जो मैनर प्रोवाइड किया था दैट मैनर वाज नॉट बीन फॉलोड. दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो, अच्छा इसके ऊपर आप चाहे तो देयर आर सो मेनी जजमेंट्स आर देयर ऑन दिस. 3 टायर्स यू कैन रेफर फ्रॉम ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट सितंबर 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, जिसमें कि साहब उन्होंने इस बात के ऊपर केस को खत्म कर दिया कि भाई आपका रूल 142 का क्लियर वायलेशन किया है, आपने DRC 01 इशू नहीं किया. नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग केस विद अस जो हमारे पास एक कलकत्ता से आया था मेरे पास. उसमें आई वाज सरप्राइज्ड टू गॉट रिस्पांस फ्रॉम फैक्स इवन DRC 01 आया, शो कॉज नोटिस नहीं. ऑफिसर से कहा शो कॉज नोटिस तो दे दीजिए, मैं जवाब किसका दूं? वो नहीं, हमारे शो कॉज नोटिस ऐसे ही जाता है, जैसे मैडम ने बोला था DRC 01 क्या शो कॉज नोटिस है, तो ऐसे ही उन्होंने हमारे यहाँ शो कॉज नोटिस का यही फॉर्मेट है DRC 01. उसमें क्या लिखा हुआ है? आपको टैक्स इतना, इंटरेस्ट इतना, पेनल्टी इतना, हमारे हिसाब से जवाब दो, ये क्यों नहीं लगाए? अरे किसका जवाब दो भाई, आप मुझे बताओ तो सही, ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कहां से आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं. So anyway, my case is still pending, but somehow, I don't know, fortunately I should say or unfortunately, I happened to came across this judgment from Honorable Jharkhand High Court on the same issue, Vishwakarma Industries, whereby the same issue, same factual scenarios were there, that DRC 01 was issued, show cause notice was not there. So in either of the case, this is a clear violation of 142. Fine? So, एक तीसरी चीज और आपको बताता हूं, जो सब केसेस आप जब सेंटर के जितने भी शो कॉज नोटिस सबके पास आए, आई कैन से विद माय एक्सपीरियंस 99%, 1% में बड़ा सेफली छोड़ के चल रहा हूं कि कुछ लोगों ने ठीक कर दिया होता. सो इन 99% ऑफ द शो कॉज नोटिस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट, उन्होंने एक नया टैक्ट अपना लिया है आजकल. उनका या तो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता DRC 01 को, या आई डोंट नो व्हाट द रीजन. व्हाट दे डू इज दे इशू शो कॉज नोटिस और उस शो कॉज नोटिस के ऊपर लिख देते DRC 01. आप जाके देखिएगा क्या. व्हाट दे डू इज दे इशू अ शो कॉज नोटिस और शो कॉज नोटिस के ऊपर लिख देते DRC 01 C रूल 142 सब रूल 1. सॉरी, वो अलग बात करेंगे, वो तो मोड ऑफ कन्वर्जन बाद में करेंगे अलग से बात. अभी तो कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट क्या है. So law says there has to be 2 documents, SCN, DRC 01. कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, SCN दे रहे हैं, DRC 01 नहीं दे रहे. कुछ महानुभाव ऐसा भी कर रहे हैं कि DRC 01 दे रहे हैं, SCN नहीं दे रहे हैं. और एक तो जो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है वो क्या हो रही है, SCN के ऊपर ही DRC 01 लग गया. जस्ट लाइक मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ नरेंद्र मोदी और कल से आई विल बी ट्रीटेड एज लाइक ए नरेंद्र मोदी. So all these are rubbish thing, and I can assure you, आपके 50% of the cases सिर्फ इस point से cover होते. Coming to next point, very interesting. DRC 01A, what is that? DRC 01A. उधर से बताया था मुझे. इंटीमेशन ऑफ, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मैडम, कोई बात नहीं. इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं. इसकी हिस्ट्री क्या है. सी, प्री GST एंड इन GST, यू आर वेल अवेयर, इफ यू आर गोइंग टू पे द डिमांड बिफोर शो कॉज नोटिस एंड आफ्टर शो कॉज नोटिस, देयर इज अ डिफरेंस इन पेनल्टी. करेक्ट ना? इफ आई टॉक अबाउट अंडर GST लॉ सेक्शन 74, अगर शो कॉज नोटिस इश्यू होने से पहले आप टैक्स इंटरेस्ट डिपॉजिट करा रहे हो, देन यू आर सपोज्ड टू पे 15% पेनल्टी. जो आइडियली 100% होती है पेनल्टी, उसकी जगह 15% पे करना है. शो कॉज नोटिस इश्यू होने के विदिन 30 डेज कर रहे हो, देन इट विल बी 25%. रेस्ट ऑफ द पेनल्टी गेट्स इम्यून. करेक्ट ना? सो आप ये देखिए, एक इवेंट क्या है कि आपने शो कॉज इश्यू कर दिया, यहां पर इश्यूएंस है, इवन सर्व भी नहीं. शो कॉज नोटिस इश्यू कर दी, 10% का नुकसान हो गया.
और ये ऐसा सिस्टम बनाया क्यों है 15%, 25%, 50%, 100%, so that better compliance of litigation comes in. This is what government wants. So at least assessee must have an opportunity. Assessee must have an opportunity कि उसको पता तो लगे शो कॉज नोटिस इशू होने वाला है. Identical provisions were there at pre-GST also. If you want to refer service tax, then provision to section 73, that was also the same. Extended period invocation और जो invoke होता था, उसमें जो notices issue हो रहे हैं, उसके केस में penalty का क्या system था, यही था, जैसे अपने यहाँ पर. Pre-SCN, post-SCN within 30 days, post-order within 30 days, इतना, उसके बाद पूरा 100%. Now what happened? Keeping this objective in mind, government came up with an instruction to the excise and service tax authorities that before issue of the show cause notice, you will engage with the assessee in a pre-SCN consultation. The term used was pre-SCN consultation. It came in 2015. Many of the taxpayers skipped that. Many of the officers skipped that, sorry. They have not issued that. They have not conducted pre-SCN consultation. Pre-SCN consultation is what? You call the assessee, you give a notice that and tell him that we are going to issue the show cause notice with this kind of demand. Either you may pay or explain us. If your explanation is fine, you may drop this. We will not issue the show cause notice. Or if you are convinced, then you may pay the amount. So that assessee got an opportunity to know that the show cause notice is going to be issued. This was the objective behind this whole of the story. So, अच्छा, उस टाइम पर जो लोग वो लेके आए थे, that instruction came for cases whereby the demand is more than 50 lakh rupees. But in many cases it doesn't happen. So, in the case of Amadeus India Limited, what happened? First case on this issue was dealt by Honorable Delhi High Court. Amadeus India Limited on 8th May 2019, GST के टाइम की बात, GST आ गया था तब तक, but case we are discussing here of service tax. On 8th May 2019, Delhi High Court said in case of Amadeus India that you have not done pre-consultation. So without going on merits of the case, whether tax was leviable, not leviable, etc., whatever it is, you request the remand. So what service tax officer done is, they have created the demand, issued the show cause notice, hearing happened, order passed, but pre-consultation was never happened. So what High Court did? High Court says demand is quashed. Whole demand is quashed without going into merits of the case. This was a case made by not by the DGI, but other central tax officer, service tax department. Fortunately, I had on the very same time, I had one of the case. One of my client got a notice for approximately 49 crore rupees under the service tax law. Show cause notice. With the same point. No pre-consultation. No pre-consultation. But the case was made by the DGI authorities. And if you go to this 2015 circular, this para 5 is not of 2015, rather it is of 2017 circular, which reproduced 2015 circular. Anyway. So, इसमें ये साफ लिखा हुआ है जो 2015 का है कि ये जो matter है, this will not cover preventive cases. अगर preventive cases है तो ये intimation वाली बात, ये pre-SCN consultation will not apply. It will go to that instruction. Anyway. So I filed the petition before the Honorable Delhi High Court directly because the merit issue was, you can say it was litigated. If particular services provided by the assessee qualifies as export or not. It was a bit controversial issue क्योंकि जिनको bill हो रहा था वो they were the same establishment. Shareholding बिल्कुल identical था, same था, something. So I decided to go on technicals. I filed a petition before Delhi High Court. Just like Amadeus, I said the Amadeus should apply in my case. But the point raised there was
it is not applicable on preventive. Then I explained the court, honorable court, like, what is preventive? Preventive doesn't mean that the DCI officer is doing whatever they are doing is preventive. Just because name of a officer wing is a preventive, it doesn't mean it is preventive. Preventive means you are stopping something to occur. And in 2019 they are giving me a show cause notice for service tax liability. How come one can think it is a preventive? So Honorable High Court agreed with our submissions, and fortunately we got a favorable order in line of MEDS itself. I could quash whole of the demand of 49 crore just on this issue. No PSC in communication, they have given it. And please mind, the government has also more or less accepted. Why I am telling you, government took both the cases before Supreme Court. And now Supreme Court has issued the notices on those petitions only on one ground. Only and only on one ground. They have not accepted the main point. The Supreme Court has issued the notice in SLP on only one of the prayer of the department that कि आपका ये जो कोर्ट में टाइम वेस्ट हो गया ना, गवर्नमेंट इज लाइक मेकिंग अ मर्सी पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो टाइम वेस्ट हो गया हमारा हाई कोर्ट के, उसमें जितना टाइम लग गया, ये टाइम हमारे फ्रेश प्रोसीडिंग करने के लिए एक्सक्लूड है. दैट्स इट. सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट इवन एडमिटेड द पिटिशन ऑन दिस पॉइंट कि आपने ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो किया गलत किया, सही किया. दे सेड ओके, इट इज फाइन. सो नाउ द सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर ओनली लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ इन दीस केसेस. ये जो टाइम दिल्ली हाई कोर्ट के पास लग गया है, क्या हम इसको एक्सक्लूड कर दें इन मेकिंग अ फ्रेश प्रोसीडिंग. सो यू बाय दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि how the cases are going on. So this is on technical ground. So I always go on a technical ground first. Many a time it happens, just like you said, I just took an example, please don't take it otherwise. ना अब तक कई बार नाम नहीं मैंने. Anyway, see, most of the time it happens. We receive a notice. आपके पास एक नोटिस आया. सबसे ज्यादा नोटिस कॉमन क्या है, उसी की बात करते हैं. मैच मिसमैच. मैच मिसमैच का नोटिस आया, करेक्ट है ना, कि ITC मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, समथिंग. अब द मोमेंट यू रिसीव द नोटिस, व्हाट हैव यू डन? आपने क्या किया उसके बाद? क्या चीज सर? रिकंसिलिएशन बनाओ. अच्छा, ये मिसमैच क्यों आ रहा है, 2A में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अकाउंटेंट को बुलाओ या अकाउंटेंट को भेजा भाई रिकंसिलिएशन बना के ला, समथिंग. आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग. व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट. वन शुड डू दिस एक्सरसाइज. वो डिफरेंस भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है. बट बिलीव मी, मेरे ऑफिस से आज तक एक बार भी हम लोगों ने कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं दिया. एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ नोटिसेस मस्ट हैव आंसर्ड फ्रॉम माय ऑफिस. We always ask one thing, apart from jurisdictional issues, always ask one thing. Law never provides to maintain a reconciliation statement. The figures you have taken from 2A, which is non-existent document. So in our humble opinion, this kind of reconciliation is not required to be made by us. If you have a different opinion, or you understand it differently, in which provision it is mentioned that you need to maintain a reconciliation statement with 2A, can let us know. उसका आज तक मेरे पास कभी रिप्लाई नहीं. And not even in a single case, today is not my topic of 2A. So आपका शायद हो चुका है वो 2A, आपने डिस्कस कर लिया. I'm not entering into that. 2A, just to conclude in one line, 2A is good for nothing. क्योंकि अभी भी हम लोग जो मेनली 17, 18, 18, 19, 19, 20, 19 सालों की बात कर रहे हैं. So in those years at least, this 2A is non-existing document. अगर आप लॉ उस टाइम का जो था, क्योंकि लॉ बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ है, अगर आप उस टाइम के लॉ को जाके पढ़ोगे, लॉ इज सेक्शन 37, 38, 39, रूल नंबर 59, 60, 61. As existed that time, you will find 2A was having life of only 5 days. 11 से लेके 15 chapter ends. उसके बाद उसकी लाइफ नहीं थी. And 2A cannot be treated as a document which can be relied upon as an eligibility criteria for ITC. इसमें कोई दो राय की बात नहीं, कहीं किसी लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ. कई बार ये वाली चीज आ जाती है, बड़ा फनी चीज भी मिलने को मिलती है, बट ऑफिसर्स बोल देते हैं. सुनने में तो मेरे लिखने में अभी तक नहीं आया मेरे पास, कि आपने वो 16(2)(c) की कंप्लाई करने के लिए हमें 2A देखना है. 16(2)(c) इज व्हाट, कि पीछे वाले ने पेमेंट कर दिया नहीं कर दिया. तो पहले तो आप ये बताओ, आप खुद बताइए, 2A का लेना देना है पीछे वाले के पेमेंट करने से? कोई लेना देना है? नहीं है.
और अगर ऐसा हो गया तो मान के चलिएगा डिपार्टमेंट ने जिस दिन ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि 2A में नहीं आ रहा, दैट मींस 16(2)C आपका कंप्लाई विद नहीं है। इसका उल्टा क्या हुआ, 2A में आ गया तो 16(2)C कंप्लाई हो गया। फिर तो जितने भी डिपार्टमेंट ने केस बनाए ना फेक इनवॉइसेस वालों के, उनके 2A तो कभी मिसमैच होते ही नहीं है। कभी होते देखा वो फेक वालों के 2A मिसमैच होते हो, तो डिपार्टमेंट सारे केस चले जाएंगे। That is that they also understand this aspect. So this ये ITC का नोटिस कभी भी it is good for nothing, match mismatch. I will take one aspect from my point, but आप लोग कल डिस्कस कर चुके होंगे इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाता। Coming back to this issue कि DRC 01A जो कि इस रूल ने बताया है हमको लेके आना है। Now what happened by inspiring from this legacy जो 2019 में डेवलप हुई, जो एमिडियस इंडिया का जजमेंट आया, go against government, but I truly appreciate the efforts of government. Government recognizes कि this is important, कि assessee को पता चलना चाहिए शो कॉज नोटिस आने से पहले कि आपके अगेंस्ट में शो कॉज आने वाला है, so that if he wants to wind up things, he can pay the amount and can take a benefit of less penalty. They brought up this rule 142(1)A with effect from 9th October 2019. रूल 142(1)A कि जब भी शो कॉज नोटिस देंगे, शो कॉज नोटिस देने से पहले DRC 01A में आपको एक प्री कम्युनिकेशन दिया जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जो पहले जिसको प्री कंसल्टेशन बोलते थे, नाम अब उसका नाम चेंज हो गया, प्री कम्युनिकेशन हो गया। प्री कम्युनिकेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म DRC 01A। अभी समस्या ये हुआ कि गवर्नमेंट वांट्स फ्रॉम टैक्स पेयर एंड टैक्स प्रोफेशनल कि आज 12 तारीख को दिवाली होगी, दिवाली को रात को एक नोटिफिकेशन आने वाला है। दे वांट कि भाई आप उसको आज से इंप्लीमेंट करो। करेक्ट है ना, ऐसा होता है। बट एज फार एज ऑफिसर्स आर कंसर्न्ड, दे नेवर बॉदर अबाउट इट। तो गवर्नमेंट टुक अ डिटेल, गवर्नमेंट टुक सम डेटा फ्रॉम GSTN कि कितने 1A इशू हुए 1 से पहले, कितने 1A इशू हुए 1 से पहले। सो दे गॉट सम स्केरी फिगर्स, स्केरी फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द assessee. So intentionally this rule was diluted. This rule was diluted on 15th, after 1 year, 15th October 2020. This rule was diluted how? आप सामने देख सकते हैं, जहां पर शेल लिखा हुआ था उस शेल की जगह मेक कर दिया जाए। ठीक है, करेक्ट है ना। एनीवे, अब थोड़ी सी इसके बाद मे वाली बात बाद में करते हैं, तो उन्होंने पहले तो एक चीज को फ्रीज कर लेते हैं। पीरियड बिटवीन 9th October 2019 टू 14th October 2020, यानी कि 1 साल 6 दिन का जो पीरियड है, इसमें तो देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट कि भाई अगर DRC 01 नहीं दिया है, इन दैट केस दैट DRC 01 हैज टू गो, वो शो कॉज नोटिस वैलिड नहीं है। करेक्ट है ना, वो मैंने आपको जजमेंट में बता दिया। आप यू कैन टेक डायरेक्ट शेल्टर फ्रॉम एमिडियस इंडिया, यू कैन टेक डायरेक्ट शेल्टर फ्रॉम बैक ऑफिस IT सॉल्यूशन, यू कैन टेक डायरेक्ट शेल्टर फ्रॉम द GST जजमेंट। जो श्री टायर्स मैंने आपको बताया था, उसमें दोनों इश्यू थे, ना तो DRC 01 था ना DRC 01A था। ठीक है, सो इफ यू आर हैविंग अ केस, आप जाके देखेंगे अपने पुराने केसेस जो अभी तक आपके पास आए हुए हैं, जिसमें भी शो कॉज नोटिस इस पीरियड में आया है, अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच में, उसमें जाके देखिए 1A था या नहीं था, तो यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू गेट द केस डिसाइडेड इन योर फेवर और एक्सक्लूसिवली ऑन दिस इशू। Coming to part thereafter, 15th October 2020 and till now, अभी क्या हुआ कि ये शो कॉज नोटिस से पहले प्री कम्युनिकेशन DRC नोट खत्म हो गया क्या अभी? What do you think? टेक्निकली खत्म हो गया। मे लगाने से क्या हुआ? सॉरी, ऑप्शनल हो गया, ऑप्शनल हो गया। एनीवन एल्स? Anyone else? May can be interpreted as shall.
आपने बड़ा ही फिलोसफिकल बात बोली है। तो देखो ये बोलना बड़ा आसान है, तो कल को डिपार्टमेंट पता क्या कहेगा, दैट शेल कैन बी ट्रीटेड एज अ मिल्क। So one, okay, you have every right to say this thing, but you need to explain it. Why so? जरा ऊपर बैठो, नीचे खाली है अभी नीचे। मुझे लग रहा मित्र मंडली वगैरह कुछ है। अच्छा, मैं एक आपको दूसरी सिचुएशन देता हूं। लेट्स सी गवर्नमेंट इसको ऑल्टर करने की जगह इसको डिलीट कर दे, तब क्या होता? लेट्स से वो अमेंडमेंट ऐसा होता कि वो शेल की जगह में नहीं किया, वो इसको रिमूव कर देते, डिलीट इट विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर 2020। दिस 142(1)(a) एंड 2(a) इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज है, उसको दोनों को डिलीट कर दिया। क्या होता उस टाइम? मेरे को कुछ रेलेवेंट पॉइंट सुनाई दे रहा था यहाँ से, इसलिए मैं सुन। It is going to create an impact on natural justice. नहीं, इम्पैक्ट नेचुरल जस्टिस जिसकी आप बात कर रहे हो, तो शोकॉज नोटिस आना ही है ना। हम तो शोकॉज नोटिस से पहले की जो लॉ ने फिक्शन लगाया उसकी बात कर रहे हैं। नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शनल हो गया मैं यहाँ पे, करेक्ट? व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज, अगर मान के चलिए 142(1)(a) या 2(a) नहीं होता, तो क्या ऑफिसर बता नहीं सकता था टैक्स पेयर को कि तुम्हारे अगेंस्ट में इतने का शोकॉज देने वाला हूं? Whether the officer was having an option or not at that point of time. अरे वो बताता नहीं, बताता जब ऑडिट होती है बताता ही है ना कि हमारे हिसाब से इतना हो गया, स्क्रूटनी करता है बताता ही ना हमारे हिसाब से हम इतने का बनाने वाला है, तो बताता ही, इट इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर हिम। प्लीज माइंड, मे इज नॉट ऑप्शनल, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। मे डजंट मीन ऑप्शन। कानून में 3 तरीके के प्रिजम्पशन होते हैं। टैक्स लॉज में ज्यादातर 2 यूज होते हैं, शैल और मे। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रिजम्पशंस विद इन स्टैट्यूट। वन इज कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, जिसमें किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर लॉ में कहीं किया कि इट विल बी डीम्ड दैट, इस तरीके से, दैट इज कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। इसके बाद किसी कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो अदरवाइज सोच सके। एक होता है मैंडेटरी प्रिजम्पशन, विच इज सिग्निफाइड बाय द वर्ड शैल। उसका क्या मतलब है? ऐसे ही मानेंगे until unless proved otherwise. I got your point. Until unless proved otherwise. What is may? That's a third type of presumption, that is discretionary. There is a lot difference between option and discretion. Discretion का मतलब है you have to apply your mind to a particular situation and decide fairly कि आपने जो discretion exercise करनी है उसमें yes या no क्या करना है। तो जब मैं यहां लगा हुआ, how I read this provision कि up to 14th October 2020 the assessing officer was bound to issue DRC 01A with effect from 15th October 2020. He has to exercise his discretion whether to issue DRC 01A or not. While exercising this discretion, he has to act judiciously. Judiciously का मतलब ये है कि वो DRC 01 इश्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस कंक्लूजन पर पहुंचने के जो रीजंस हैं कि इस केस में तो 1A इश्यू करूंगा, इसमें नहीं करूंगा, he has to write it in record. He has to reduce this aspect in writing. Reasons are always said to be heartbeat of any conclusion. Before a party is reaching to a conclusion that DRC 01A is not required to be issued, in that case, he has to record it in writing.
You may refer this judgment from Oil and Natural Gas Corporation, superb judgment, which clearly says that the judicial approach has to be followed by the even quasi-judicial authorities. Or especially tax laws, our tax laws, indirect taxes जिनकी हम बात करें pre-GST, आप किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो, किसी भी डिसीजन को ले रहे हो, तो ऑफिसर को वो अपना लिखना पड़ेगा, रीजंस हैज टू बी रिकॉर्डेड। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप लोगों को जितने भी आज तक शो कॉज नोटिस आए हैं, उन नोटिसेज में कितने केसेस में आपको ये रीजन रिकॉर्ड मिला DRC 01 में या शो कॉज नोटिस में लिखा हुआ कि वी आर नॉट इशूइंग DRC 01A फॉर दिस रीजन? हैव यू गॉट अ सिंगल शो कॉज नोटिस? आपको मिला ऐसा कुछ भी? इन माय हम्बल ओपिनियन नो, मुझे आज तक नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से द ऑफिसर हैज वायलेटेड this basic principle of natural justice. They have violated principles of natural justice. Fair hearing के तरीके को उन्होंने वायलेट किया। How the court is reacted on this? अभी पूरा होने दीजिए। ये लिया आपके सामने रवि एंटरप्राइजेस, उत्तराखंड हाई कोर्ट, फाइनल जजमेंट आफ्टर द अमेंडमेंट इन लॉ। जो प्री अमेंडमेंट तो हमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, उसके बाद बहुत जजमेंट है। Even after amendment, जब shall की जगह may convert हो गया, in this case, what happened? वही DRC 01 जो issue हुआ, वो issue हुआ इस केस में। ऐसा नहीं issue नहीं हुआ, लेकिन वो कैसे issue हुआ है? और नेम से जिस दिन DRC 01 दिया, उसी दिन DRC 01 दे दी। तो कोर्ट ने क्या कहता है इस चीज? So whole of the proceeding got quashed by the Honorable Uttarakhand High Court. इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहां से किसी ने एक बड़ा मजेदार बात बोली थी, शैल हैज टू बी, सॉरी, मे हैज टू बी रेड एज शैल। देखिए वो कब ऐसा किया जाता है, जब किसी अथॉरिटी को डिस्क्रिएशन दिया गया, ठीक है, मे वाली वर्ड यूज किया गया, और उसके डिस्क्रिएशन एक्सरसाइज करने से सामने वाले का कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इन दैट केस मे हैज टू बी रेड एज शैल। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने 142 1A रखा था, नाउ देयर इज अ 142 2A एज वेल। 2A क्या कहता है? जब 1A इशू होगा, देन असेसी हैज द राइट कि उस 1A को रिवर्ट करेगा, यानी उसको रिप्लाई करेगा। DRC 01A जो इशू होगा, उसका पार्ट A होगा जिसमें कि ऑफिसर दे रहा है, उसका पार्ट B होगा जिसको कि असेसी को रिस्पॉन्ड करना है। तो दैट इज द राइट ऑफ द असेसी टू रिस्पॉन्ड टू DRC 01A। इन रवि एंटरप्राइजेज, ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज हाइलाइटेड दिस एस्पेक्ट। This says by not issuing or by giving a very nominal time in DRC 01A, the right of the assessee got infringed, which is enshrined in 142 2A, Rule 142 2A. So that's very important one. One need to be take care of it. And जो मैं आपको MP High Court का जो टेक्निकल जजमेंट बता रहा था, उसमें ये वाला इशू भी है। DRC 01 इशू नहीं हुआ, वहाँ पर जो है I was arguing, I was surprised what happened. The government counsel said, सर ऐसा तो होता नहीं है, मतलब हम लोग तो DRC 01 इशू करते हैं। मैंने कहा सर, what I said is, my lord, kindly record this statement. I get your point. On the first hearing, what happened? I was arguing in Honorable Madhya Pradesh High Court. I said, sir, DRC 01 नहीं है, ये वो और ये जरूरी है, something वो पढ़ के दिखाया। जब तक मैं ये बोलता, when जज साहब asked कि भाई क्या आपका क्या, नहीं सर हम तो इशू करते हैं नॉर्मल। The moment they say कि हम तो इशू करते हैं, मेरे लिए बचा ही नहीं कुछ भी। Try to understand why. मैंने कहा they are accepting कि ये इशू करते हैं, तो 5 केस में करते हैं, मेरे केस में नहीं किया। Discrimination with me. अरे या तो ये वो आदमी ये कहता है ना हम तो करते ही नहीं है, वो एक अलग बात थी, क्योंकि हर केस में बोला कि ये कहते हैं मे हो गया जी, मे का मतलब ऑप्शन। सो वहां तो कहते हैं हम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर्व फिजिकली। आप लोग सर कितना टाइम है मेरे पास? 5 मिनट। अच्छा ओके, बहुत सारा 3 पॉइंट कवर करेंगे 15 मिनट। सही, ओके फाइन। सो अभी मेरे ऊपर से हुक्म आ गया, सो आई एम लीविंग। मैं बड़ा क्विकली गो थ्रू आपको जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या फिजिकल नोटिस, आप फिजिकल SCM रिसीव कर रहे हैं? आप फिजिकल SCM रिसीव कर रहे हैं? कैसे आ रहे हैं, ईमेल से या पोर्टल पर? सारे पोर्टल पर आ रहे हैं, वेरी गुड। और ऑर्डर भी पोर्टल पर आ रहे हैं। स्टेट के लिए कानून अलग है, सेंटर के लिए अलग है, ऐसा? जो
सारे आने चाहिए, वो सारे के सारे ऑर्डर्स पोर्टल पर आने चाहिए। ये ध्यान रखिए। मैं मेरी कंक्लूजन बता रहा हूं आपको विदाउट गेटिंग इनटू ऑल दीज डिटेल्स कि ऑर्डर हैज टू बी ऑन पोर्टल, शो कॉज नोटिस हैज टू बी इश्यूड ईदर ऑन पोर्टल और थ्रू ईमेल, दैट्स इट, नो फिजिकल कॉपी। हाँ, एक मिसमैच वाले के ऊपर एक मैं 2-3 पॉइंट क्विकली ले लेता हूं। एक मिसमैच वाले नोटिसेस थे, बहुत सारे हैं। रिकंसिलिएशन दे भी दिया। रिकंसिलिएशन देना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। उसका मैं रीजन बताता हूं। पहली बात तो वो केस बनेगा ही बनेगा जब जितने मिसमैच अमाउंट के लिए। दूसरा, जैसे ही आपने रिकंसिलिएशन दिया, यू एडमिटेड जीएसटी एक्ट 2A इज अ रिलेवेंट। तो एविडेंस एक्ट में जो प्रूव असेसिंग ऑफिसर को करना था, समथिंग व्हिच वाज ऑन द शोल्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, you consented to it and now that is an admissible evidence. Anyways, लेकिन एक चीज सबको फिर भी ध्यान है या बिल्ली की तरफ ध्यान है? What we discussed is manner provided in the law is supreme. अगर वो फॉलो नहीं किया then whole of the proceeding will go. Correct ना sir? Please have a quick look on this. Rule 71 as it was existed till October 20. Please have a quick look. What this rule says कि जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम में ड्यू टू मैचिंग ऑफ क्रेडिट, इन दैट केस जो क्लेमेंट है यानी रिसिपिएंट है जिसके की मिसमैच का नोटिस, जिसके की मिसमैच आप बोल रहे डिपार्टमेंट, उसको एक नोटिस दिया जाएगा इन फॉर्म MIS 01, GST MIS 01। बाय बाय। MIS क्या है? आपके शॉर्ट फॉर्म है मिसमैच का, MIS मिसमैच। किसी ने इस मिस को देखा आज तक? इस मिस 01 MIS 01 को देखा किसी ने आज तक? आपको हजारों नोटिस रिसीव हो गए आईटीसी मिसमैच के, ये नोटिस आया आज तक? क्यों दिमाग लगाना है? लॉ में दिया हुआ है आपके आईटीसी मिसमैच के में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसकी शुरुआत होगी, आपको एक नोटिस दिया जाएगा इन फॉर्म MIS 01। वहां हमारे यहां क्या था? डायरेक्ट शो होगा। लॉ में एक प्रोसीजर दिया हुआ है टू एक्सरसाइज अ पावर इन अ सर्टेन वे कि यहां मिसमैच आएगा तो फिर आगे देखेंगे क्या हो। Absolutely rubbish demands. अभी वो कहते नहीं हमारा 2 नहीं चल रहा था। कई बार क्या होता है, वो जब आप ऐसे देने जाओगे ना जवाब तो ये भी मिलता है वो that 2 was not working। किसने कहा 2 नहीं था? आप मेरे को आज तक एक भी नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जिसमें सरकार ने कहा हो प्लीज मैन आई एम टॉकिंग फॉर 17-18, 18-19, 19-20 एंड फॉर दिस एस्पेक्ट 20-21 एज वेल। आज तक एक भी ऐसा सरकार का नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि GSTR 2 हम नहीं रिलीज करेंगे, आपको GSTR 2 फाइल नहीं करना या आपको GSTR 3 फाइल नहीं करना। एक भी नोटिफिकेशन को दिखा सकता है मुझे? There is not even a single notification for the year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 which says आपको GSTR 2 और 3 फाइल नहीं करना। इसका बेसिस पूरा का पूरा हुआ है, डिटेल में और नहीं जा रहा हूं, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस। Relying upon document, बहुत बार रिसीव नहीं। Now what is relying upon document? Everyone knows. सामने वाले किसी ने ये कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया, DGGI से हमारे पास रिपोर्ट आई, उसके बेसिस पर ये केस बढ़ा दिया। अरे भाई उसकी कॉपी दो पहले, अगर उसकी कॉपी नहीं दे रहे तो इट इज गुड फॉर नथिंग। वो पुलिस वाला एग्जांपल याद कीजिए, पुलिस वाला एग्जांपल याद कीजिए। अगर चार्जशीट के साथ में चीजें नहीं लगाई जो जो एविडेंस आप रिलायबल कर रहे हो, दैट्स जीरो केस, यू कैन नॉट यूज दैट एविडेंस। इसी तरीके से अगर आप जो भी चीज रेफर कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे हो, इफ दैट हैज नॉट बीन provided to us, in that case that cannot be relied upon, that cannot be used as document supporting your case or as an evidence. Next, cross examination. आपके कितने सारे ऐसे केसेस बनते हैं जिसमें कि सेलर ने ये एडमिट कर लिया है कि उसने बिल ट्रेडिंग किया। जब सर्च हो रही थी, आपके जनरल मैनेजर हैज एडमिटेड दैट देयर इज अ
ग्रे बिलिंग लाइक 1:1, एक कच्चे का बिल होता है, एक पक्के का बिल होता है। कच्चे का तो मतलब बिल ही नहीं होता, या क्वांटिटी जितनी होती है उससे डबल एक्चुअल समथिंग दिस हैज बीन रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट। अभी आप गन कनपटी पर रख के किसी से कुछ भी लिखवा दो, उससे क्या होना है? क्या वो स्टेटमेंट आपको एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो? आंसर इज नो अंटिल अनलेस इट इज एग्जामिन्ड ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आप लोगों के केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में, which I use almost in each and every case, and you can maybe it will be difficult to believe, but I have examined many a time even officers. कि भाई तुम सर्च करने गए थे, तुमने इंस्पेक्शन किया था, गाड़ी रोकी थी, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर्च तुमने की थी, तुम्हारा क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, आ जाता है। आदत नहीं है ऑफिसर्स को क्रॉस एग्जामिनेशन देने की, क्योंकि उनको आदत क्या है, प्रेशर देके वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने की। जब उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता उनको क्या बोलना है, और वो इतनी गलतियां करते हैं, हर स्टेप पे गलती। छोटा सा क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको एक इंपॉर्टेंस बताता हूं, एक जजमेंट के। व्हाट हैपेंड इन वन ऑफ द केसेस, देयर वाज वन फैक्ट्री, नेम इज काला ग्लू फैक्ट्री। उसमें एक सर्च हुआ वैट का। वैट का जब सर्च हुआ तो जो अकाउंटेंट थे वहां पर सीनियर मोस्ट अकाउंटेंट मिस्टर बाकेला, पुरानी बात है, पुराना नाम है, तो बाकेला जी के लगा दिए होंगे 2-4 थप्पड़ जो भी हुआ होगा। अब वो स्टेटमेंट लिखा लिया गया कि भाई जितनी ये इतनी 2 नंबर की सेल है या ग्रे वाली सेल है और समथिंग जो भी जिसको आप टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करते हो। गुजरात में मैंने एक सुना राम राम वाली सेल बोलते हैं तो उससे लिखा दिया, सारी रामायण स्टेटमेंट में लिखा दिया और वो ये या वास्तविकता में क्या हुआ पता नहीं, या तो बाकीलाल को बताओ या ऑफिसर को बताओ जैसे लिखा है, बाकी किसी तीसरे को नहीं पता। तो डिपार्टमेंट ने पूरा केस बना दिया, शोकॉज नोटिस वगैरह की भाई ये उस शोकॉज उस स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर कि इन्होंने खुद ने एडमिट कर लिया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काउंसिल ऑफ द कंपनी आज फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बाकीलाल। ऑफिसर ने कहा भाई ये तुम्हारा ही एम्प्लॉई है, आप कैसे सही बोले? आप तो वही बोलेगा जो सेठ जी के, करेक्ट ना? यही बोलने वाला है। नो प्रॉब्लम, क्रॉस एग्जामिनेशन नॉट रिजल्ट एनी सम गुड यील्ड। तो बाय द टाइम मैटर लेटर बाय लेटर रीच्ड अप टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में टाइम भी काफी लगता है यू ऑल। सो बाय द टाइम मैटर रीच्ड अप टू सुप्रीम कोर्ट, वो जो मिस्टर बाकीलाल थे वो सुप्रीम अथॉरिटी के पास पहुंचे। Now what happened? What court decided is very short judgment, even आधे पेज का जजमेंट। कोर्ट ने क्या किया, तुमने बाकीलाल के स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ किया नहीं पहले, अब हो नहीं सकता, केस खत्म, केस खत्म। So that's importance of this technical things। क्विकली 1-2 चीजें और बता देता हूं आपको, और एक्सप्रेसली PH opportunity, please mind PH is different from your reply। जो पर्सनल ये नहीं है कि आपको नोटिस दे दिया, रिप्लाई दे दो और इसी के साथ PH is altogether different। PH is after you submit the reply, उसके बाद पर्सनल हियरिंग देना। आप समस्या क्या है, जब आप रिप्लाई देते हो DRC 0 कौन सा फॉर्म होता है, 6 आई थिंक, जो शोकॉज का रिप्लाई देते हैं वो जनरेट होना, कोई जो बताओ DRC 06 होता है ना, 6। अभी उसमें क्या है, टैब होता है, यू वांट पर्सनल हियरिंग, टैब होता है ना, उसको यस करना पड़ता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, वो बाय डिफॉल्ट नो पे रहता है, क्योंकि जिस आर्टिकल ने रिप्लाई दिया, भाई आप लोगों ने तो रिप्लाई ड्राफ्ट करवा दिया, अभी बोला वो आर्टिकल को भी अपलोड कर दे। अब जो अपलोड करते हैं उसने तो देखा रिप्लाई अटैचमेंट, प्लीज फाइंड एनक्लोज अटैचमेंट, अटैचमेंट लगा दिया, अब वो यस नो कुछ करना तो कुछ भी नहीं किया तो नो रह गए। तो ऐसे 90% से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें PH चाहिए, आंसर इज नो। जब आप प्रिंट आउट निकालते हो उसका DRC 0 उसमें लिखा हुआ आता है पर्सनल हियरिंग नो। अब पर्सनल हियरिंग को नो लिख दिया तो कौन सा ऑफिसर देने वाला है? बट इस केस में प्लीज लॉ पढ़िए, लॉ क्या कहता है। An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty। Hold on, ऑफिसर सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। जब भी रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है किसी पर्सन से, PH चाहिए तो PH देना है, करेक्ट है। अब इसके बाद और लिख के आगे लिखा है, और
where any adverse decision is contemplated against such person. या तो रिक्वेस्ट रिसीव हो या एडवर्स ऑर्डर आ रहा है, उस केस में भी पीएच मैंडेटरी। अल्ट्राटेक का जजमेंट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आपके सामने है, उस केस में भी देना है। और ये आपके दो जजमेंट में आपके सामने रख रहा हूं, वन फ्रॉम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, वन फ्रॉम ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, जिसमें यही वाला मैटर डिस्कस हुआ। वो टैब बाय डिफॉल्ट नो है, नो भी कह दिया तो भी कहना। देन ऑल्सो कोर्ट क्लियरली सेड दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, देयर कैन नॉट बी एस्टोपल अगेंस्ट द लॉ। लॉ सेज अगर एडवर्स डिसीजन ले रहे हो तो पीएच देना है। या तो फिर एक बात है, आपने रिप्लाई फाइल कर दिया, ऑफिसर उस रिप्लाई के बेसिस के ऊपर जो असेसी कह रहा है वो मान रहा है, देन इट इज फाइन। असेसी के अगेंस्ट डिमांड खड़ी नहीं कर रहा, देन इट इज ओके। बट अगर जो डिसीजन है वो एडवर्स टू द असेसी है, देन पीएच हैज टू बी गिवन, भले ही उसने मना किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा, कई चीजें ऐसी जो मेरे को मैं सारे वो पॉइंट ले रहा हूं आपसे जो इन दिनों में नोटिस ऑर्डर आ रहे हैं, हो रहे हैं, वो शायद आपको बिना मेरिट्स पे जाए क्या क्या चीजें एग्जामिन करनी चाहिए। ऑर्डर अपलोडेड विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। ऑर्डर जब आप देखोगे तो कई बार जीएसटीएन पोर्टल पर आते हैं, उसमें सिग्नेचर नहीं मिलती। देखा आपने ये वाली चीज? अगर ये बाय डाक आता और सिग्नेचर नहीं होते तो आप क्या करते हैं? आई एम श्योर यू वुड हैव ट्रीटेड इट एज अ इनवैलिड ऑर्डर और इनवैलिड नोटिस, करेक्ट ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन ने उसको वैलिड कर दिया? नो, जीएसटीएन इज एज गुड एज अ रजिस्टर्ड पोस्ट। पर रजिस्टर्ड पोस्ट फिजिकल आ रहा था, जीएसटीएन क्या है? मीडियम हिंदू है, इधर से उधर करने का, वो अनसाइंड आ रहा था, दैट इज आल्सो illegal. कोई भी डॉक्यूमेंट जो अनसाइंड है, that cannot be treated as a valid document. You can have a direct rule. Rule 26 सबसे Rule 3 talks about it कि किस तरीके से मैंडेटरी है करना। There is a judgment directly from the Bombay High Court की order without signature cannot be treated as a valid. एक और क्विकली बता देता हूं, ये साइन देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, गौर से देखिए। इससे पहले मैंने बात की थी साइन ही नहीं, अब मैं ये कह रहा हूं साइन है ऑर्डर के ऊपर, डिजिटल साइन है, लेकिन कुछ इस तरीके के साइन। क्या लिखा हुआ है इनके ऊपर? सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, वैलिडिटी अननोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप लोग डीएससी से साइन करते हो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आता है? असेसी के ऊपर क्या चीज? ग्रीन टिक लिखा हुआ आता है, वेरीफाइड लिखा हुआ आता है, करेक्ट? दैट इज अ करेक्ट डीएससी। सो अगर आपके पास कोई ऑर्डर इस तरीके का है, प्लीज माइंड दैट्स अ नलिटी, कोई वैल्यूएबल ऑर्डर नहीं है वो। यू कैन रेफर द जजमेंट फ्रॉम ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन दिस, जुलाई 2022, जो क्लियरली कहता है जब ये हाउ कम वन कैन अज्यूम इट टू बी अ वैलिड सिग्नेचर, जब सिग्नेचर में लिखा हुआ है कि वेरिफिएबल नहीं है, अननोन वैलिडिटी है, कैसे पता चलेगा ये करेक्ट है? सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग्स by which one can identify technical grounds के ऊपर क्या क्या illegality रह जा रही हैं, उन चीजों को try to highlight them in your cases at appellate levels, जिनसे आपका केस शायद मेरिट्स पर जाए नहीं आपकी फेवर में। Sir, if you permit, can I take 3 or 4 minutes more? एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, which I think I'll be unfair अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एक बहुत कॉमन चीज जो मुझे देखने में आया है जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हो रही, ऑफिसर आस्क फॉर समथिंग एंड यू सर्व इट इन द प्लेटर। ओके, दिस कैलकुलेशन, दैट कैलकुलेशन, इन दिस फॉर्मेट, दैट फॉर्मेट, एंड कंक्लूजन इज जो आपने फॉर्मेट में जो कैलकुलेशन करके दिया वही डिमांड नोटिस में था, वही शोकॉज नोटिस में था। रिलाइंग अपॉन डॉक्यूमेंट भी वही बनता है जो आप दे रहे हो उनको बना कि देखो ये एसएससी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट। Please try to understand what you are supposed to maintain. पहली बात तो ये समझिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है। क्या ऑफिसर जो फॉर्मेट बता दे रहा है इस फॉर्मेट में ऐसा कोई रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है? लॉ इज क्लियर, सेक्शन 35 रेड विद रूल 56 टेल्स यू क्या क्या आपको मेंटेन करना है। दैट्स इट, वो जाके पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी देने की ऑफिसर कहे कि उसके अलावा चीज मांगता है, तो मेरे पास तो ये है, ये चाहिए तो बताओ, नहीं है तो अपने आप बनाओ। Why should I exercise on his behalf without pay? And that too, जो मुझे पे कर रहा है उसके अगेंस्ट में? You won't believe, हम लोग यही करते हैं, हमारा सीधा सिस्टम है। वो कहते हैं ये फॉर्मेट दो, कौन से सेक्शन में ये वाला फॉर्मेट दिया, प्लीज लेट अस नो, विल प्रोवाइड यू।
जैसे हम अगर हम मैडम टाइम मेरे पास लिमिटेड है, 2 मिनट मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए अपनी बात। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सारी एक्सरसाइज जो आप करते हो ना, यू आर गोइंग टू हेल्प द ऑफिसर टू क्रिएट डिमांड अगेंस्ट द सिस्टम। प्लीज डोंट डू दैट। जो लॉ में लिखा ही नहीं है मेंटेन करना है, वो क्यों आप बना के दे रहे हो उसको? He has vast power, he has a सरकारी मशीनरी है, अमला है पूरा, let them exercise, let them understand books of account। वो कहता नहीं कि एक्सेल शीट में भेजो, ऐसा ऐसा क्यों भेजो भाई? Anyway, इसके मैं क्यों ये वाली बात कर रहा हूं, let's try to understand। Please mind, burden to prove taxability or wrong classification और अंडर स्टेटमेंट बहुत बार होता है ना। आपने तो ये चीज 5 लाख की बेची थी, इनवॉइस 2 लाख का था। आपने तो ये 10 आइटम मैन्युफैक्चर करके बेचे थे, इनवॉइस जो किया है वो 3 आइटम का किया, समथिंग समथिंग, करेक्ट? आपने ये चीज 12% में क्लासिफाई किया, दिस इज 18%। अगर ऐसा कोई भी केस बन रहा है, इन सभी केसेस में burden to prove taxability, burden to prove understatement, burden to prove wrong classification lies on the shoulder of the tax officer. If I talk from the legal point of view, if you go by the Evidence Act, burden to prove this aspect lies on the shoulder of the person who alleges that. Who is alleging here? Officer. So burden to prove lies on their shoulder. If you want a tax reference, please refer beautiful judgment from the income tax in a KP Varghese versus income tax officer, superb judgment from Honorable Supreme Court. You can refer that. बहुत क्लियरली वो बोलते हैं कि इस तरीके से आपको जो जजमेंट है वो इसके ऊपर है। ये सिर्फ हवा की बात नहीं है, ये चीज मेंटेन होती है। बट लेकिन जब आप कोई डेटा या डिटेल आपने बना के दे दिया तो क्या हुआ? he is going to believe on that ना, उसको आप क्रॉस भी नहीं कर सकते। So please always mind, burden to prove lies on the shoulder of the department on all these aspects except ITC। ITC की बात आज समय नहीं है, किसी और दिन करेंगे। एक मैं लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूं इसी टॉपिक के ऊपर। Recent judgment what happened in one of my cases, this was a dealer of Mercedes Benz। लॉजिस्टिक चार्जेस ये लोग चार्ज करते हैं, आप और यू ऑल आर अवेयर, जब आप कार सेल करते हैं तो कार के साथ में कुछ लॉजिस्टिक चार्जेस लेते हैं। तो लॉजिस्टिक चार्जेस, ये वैट का केस है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल सिचुएशन इज देयर इन द जीएसटी एज वेल। सो जैसे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज C टॉक्स अबाउट एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू, ऐसे ही जो पुराना वैट होता है महाराष्ट्र में बहुत केसेस बने हुए हैं जिसमें लॉजिस्टिक चार्जेस को सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐड कर दिया था। आइडेंटिकल केस वाज देयर इन केस ऑफ मर्सिडीज बेंज डीलर AMT मोटर्स। व्हाट हैपेंड इन दैट केस, नीचे असेसिंग ऑफिसर ने इंक्लूड कर दिया जस्ट बिकॉज़ लॉजिस्टिक चार्जेस इसमें इंक्लूड होना है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी डिड दैट, कंफर्म दैट। I came into picture at a level of second appellate authority, that means tribunal. What I did is, क्योंकि मेरे पास एविडेंस फ्रीज हो चुके थे, लिमिटेड स्कोप था, मैंने वहां पर जाके ट्रिब्यूनल में बोला, मैंने कहा सब देखो ऐसा है, मैं जिस प्राइस पर सेल करूंगा वो एमआरपी डिसाइड, जिसको टेक्निकली एक्स शोरूम प्राइस बोलते हैं, वो डिसाइडेड बाय द ओईएम, आई कैन नॉट चेंज दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्राइस तो ये है। अब वो उस केस में ऐसा था कि वो 30,000 लॉजिस्टिक चार्जेस कर रहे थे। बेंच आस्क्ड मी, मिस्टर अजय, लेट अस नो व्हाई दिस 30,000 रुपीस। आई एक्सप्लेन देम। मैंने सर 10,000 रुपीज तो मैं उसको चार्ज कर रहा हूं, उसको ये असिस्टेंस देने के लिए कि जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और इंश्योरेंस करा रहे हो, विच इज पोस्ट डिलीवरी आइटम, जो डिलीवरी देने के बाद की चीजें हैं, इसलिए आपको इंक्लूड नहीं कर सकते। 10,000 तो वो है। कुछ लोग यहाँ पर शायद ये सोच रहे होंगे नहीं वो तो डिलीवरी से पहले हो जाता है क्योंकि रोड पर गाड़ी बाद में आती है पहले, पर ऐसा नहीं है। इफ यू रीड मोटर व्हीकल एक्ट देन यू विल गेट टू नो कि पहले डिलीवरी होती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है एज पर मोटर व्हीकल लॉ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस वगैरह होता है। Anyway, बैंक साइड ओके फाइन मिस्टर अजय, व्हाट अबाउट रेस्ट 20,000? फिर मैंने उनको बताया, my lord, 4,000 rupees I am charging so that I am making my customer acquainted and aware with the features of the car. बेंच asked me, मतलब अजय जी कल हम गाड़ी देखने आएंगे तो हमको नहीं दिखाओगे क्या फीचर है विदाउट बाइंग? मैंने सर आपको मैं बताऊंगा क्या फीचर है, आपको उस फीचर को कैसे यूज करना है ये नहीं बताऊंगा। वो बेंच एग्री टू दैट एज वेल। ओके, उन्होंने कहा 4,000 ये भी ठीक। व्हाट अबाउट रेस्ट 16,000? आई वेरी ऑनेस्टली इन द ट्रिब्यूनल आई सेड, my lords, I am selling the vehicle at ex showroom price. I am charging 30,000 rupees for miscellaneous services. Out of this 10,000, 4,000 I explained. 14,000 are so many miscellaneous services which I can't explain before. And even I am not supposed to explain before you. It is duty of the assessing officer to explain. Ask him to explain.
वो क्या बताएगा बेचारा? You won't believe जो ट्रिब्यूनल का जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे, दिसंबर 2022 ऑर्डर यही ऑर्डर आ गया, क्योंकि we asked Council of Assessee कि भाई ये किस किस के लिए, they explained 10,000, 4,000, he failed to explain remaining 16,000, and then they came up with my second round. The Council of the Assessee raised a point that this is burden to prove. This evasion, this understatement by 30,000 rupees lies on the shoulder of the department, which they also proved to fail, which they failed to prove. So that is why no tax on that 30,000 rupees. So these key aspects are very important. आपको ये समझना पड़ेगा जब assessment adjudication exercise चल रही है, आपको क्या देना है. So please check whenever you are receiving a notice, क्या जो notice देने वाला आदमी correct है? क्या उसके जुरिस्डिक्शन में ये चीजें आती हैं जो वो पूछ रहा है? नंबर 2, क्या उस जिस स्कोप में वो काम कर रहा है वो स्कोप में वो ठीक पूछ रहा है? फॉर एग्जांपल स्क्रूटनी कर रहा है, वो पूछते हैं आपसे ट्रांसफर की डिटेल दे दो, क्यों दे दो भाई? स्क्रूटनी में यू कैन एग्जामिन ओनली एंड ओनली रिटर्न, यू कैन नॉट एग्जामिन ट्रांजिशनल क्रेडिट. आप ये चीज चेक कीजिए क्या वो विद इन लिमिटेशन है. सो विद ऑल दी आपसे वो जो चीज मांग रहा है क्या वो उसके राइट में आती है? क्या वो असेसी को बनाना मैंडेटरी है? With all these items, we need to equip ourselves so that we can handle this tsunami of notices to best of our understanding abilities. Maybe हमारे client को value addition दे रहे हैं, maybe हम true professional की तरीके से काम करते हैं. With this, sorry sir, I took longer time, and with this my session. Thank you very much for attention. Thank you. Thank you, sir. That was quite an informative session. I would now like to request C. Sarika Chodia, Secretary, to propose the vote of thanks for the session. Sir, thank you so much. It was really very, very impressive session. In the words of Swami Vivekananda, Uttishtata Jagrata Prapya Varanni Bodhata, which means arise, awake, don't stop until your goal is reached. Your enlightening presentation on GST today has awakened our all guests for knowledge and professional excellence. I'm sure we all are really impressed for your in-depth understanding of technical aspects of GST. It's not just about winning the case, it's about the way you meticulously approach on these technical grounds. Sir, ज्ञान का कोई मोल नहीं हो सकता है. And no one can put a price tag on knowledge. Today we are so grateful that you have shared your valuable time and expertise with us. PCMC branch has thought of having such a wonderful sessions and this platform for knowledge seekers like us to come together and explore the thirst for wisdom, Jnana Trishna. I hope all of you will take this opportunity and will make the most of these knowledge sessions. Thank you.